हाय गाइस, आई एम रश्मि सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज भी एक फूड चैलेंज होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें मैंने सारा खाना खुद ही बनाया। मीन्स जनरली मैं कुकिंग करती हूँ लेकिन बहुत कम, और पूरे दिन का खाना तो मैं नहीं बनाती, कभी भी नहीं। सो आज मैंने किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है और घर से बाहर जा नहीं सकते। तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि आप पूरे दिन घर पे टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए और खाइए। और इसमें मैंने सारी रेसिपीज भी बताई हैं, तो आप देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इट्स 11 o'clock और मैंने उठ के चाय ले लिया है और मैंने चाय भी बना ली है। तो मैं चाय पीने जा रही हूँ और उसके बाद मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। तो मिलती हूँ उस टाइम। सो गाइस इट्स 1 o'clock और अब मुझे भूख लग गई है। सो मैं जा रही हूँ आलू का पराठा बनाने, और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ आलू का पराठा। चलिए पराठा बनाते हैं। सो ये रहा हमारा आलू का पराठा। जनरली मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ खाती हूँ, बट आज नहीं खा सकती क्योंकि वो मैंने नहीं बनाया। सो गाइस अब हो गई है दोपहर और मुझे लग गई है भूख। तो चलिए कुछ बनाया जाए। आई थिंक मैं बनाऊंगी सांबर और फ्राइड राइस, बिकॉज आई लव सांबर, आई लव फ्राइड राइस, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। लोग सांबर और राइस भी सिर्फ खाते हैं, मैं यहाँ पे फ्राइड राइस बनाऊंगी बिकॉज बहुत तो मन कर रहा है खाने का। बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस मुझे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ और हमेशा पिक्चर्स स्टोरीज लगाती रहती हूँ खाना का, बिकॉज आई एम अ फूडी, आई लव फूड। मुझे अच्छा खाना ही अच्छा लगता है। एक बात मैंने नोटिस की, इस चैलेंज में एक और बेनिफिट हो गया गाइस, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि रेसिपी क्या है, जैसे कि सांबर कैसे बनता है, फ्राइड राइस कैसे बनता है। तो दोनों बेनिफिट हो गया आपको। तो चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस और सांबर। सो गाइस वेलकम इन माय किचन, और आज मैं कद्दू काटने जा रही हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो कट करते हैं कद्दू। हमारे वेजिटेबल्स कट हो गए हैं और अब मैं दिखाती हूँ कि सांभर कैसे बनाते हैं। मैंने ये यहाँ पे लिया है चना का दाल और इसे वॉश कर लिया है, और अब हम इसमें मिलाएंगे अपने कद्दू। इसमें हम लोग डालेंगे टर्मरिक मीन्स हल्दी, और डालेंगे काफी है इतना। नेक्स्ट हम डालेंगे नमक, कम रहेगा तो बाद में डल जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पानी।
सो गाइस अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन एंड इट इज रियली अ टफ जॉब फॉर मी बिकॉज मुझे नहीं आता लगाने. आई एम गोइंग टू ट्राई इट टुडे. लग गया. फर्स्ट टाइम एवर मैंने इस कुकर का ढक्कन लगा दिया. मुझे नहीं आ रहा था लगाने बट या वी डन इट. सो इसे हम चला देंगे गैस पर, इंडक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू. लंच बन गया है और ये है हमारा फ्राइड राइस और सांभर. अगर दिखाऊंगी नीचे करूंगी तो गिर जाएगा. तो सब करते हैं. और यहाँ पे हमारा गेस्ट अपीयरेंस हो रहा है मेरी बेटी का. बेटी खाना टेस्ट करोगी. और गाइस आ गई इसकी मम्मा. मम्मा so let's have our food. मेरा लंच कंप्लीट हो गया और आई डोंट थिंक सो कि शाम में भूख लगेगी बट चाय तो मैं पीऊंगी फॉर श्योर बिकॉज आई एम चाय एडिक्ट. सो शाम में चाय के टाइम पे मिलते हैं बिकॉज अभी खाना बहुत ज्यादा हेवी हो गया था और बहुत टेस्टी भी था. तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा भूख लगेगी. तो देखते हैं शाम का क्या होता है. तो मिलती हूँ शाम में. सो गाइस हो गई है रात और मुझे लग गई है भूख. तो मैं जा रही हूँ बनाने सोया चिल्ली और सब चपाती. तो चलिए किचन में चलते हैं. So guys, here is our dinner, which is soya chilli and roti, and I'm going to taste it. Amazing.
सो गाइज हमने डिनर कर लिया और यहीं पे हमारा चैलेंज भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस तरह के फूड चैलेंजेस चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।